So we started with the first thing that all our quantities would be calculated in moles. It's just a unit for counting, like every other unit. And that was the first formula that we did, which was moles is number of particles divided by the Avogadro's constant. So uske baad we had, I started talking about moles and equations, and I told you that that if you know the quantity of any particular substance, for example, I know in this equation that there is 0.1 moles. By using ratios, I can figure out the moles of all the other substances. For example, in this case, the N2 and O2 ratio is 1:1. So that means if this is 0.1 moles, O2 would also be 0.1 moles exactly. And the amount of NO would be twice that. It's 1:2. So the amount of NO in this case would be 0.2 moles. So an equation gives you a whole number ratio of how things react and in what quantity. And in what quantity are the products produced? It's like a recipe that you have to follow. So H2S reacts with Cl2, that's 1:1. So if there are 2 moles of H2S, there's going to be 2 moles of Cl2. And this is 1, 2 HCls are produced. So that means double the amount according to the ratio. This would be 4 moles. And the amount of sulfur would also be 2 moles. So you'll have the ratios. It is ज़्यादातर जगहों पे ratio 1:1 है, so this was kind of easy. I'll do one more, which is कि उसको थोड़ा सा मुश्किल कर लेते हैं कि I have sodium reacting with phosphoric acid, which is H3PO4, and it's producing Na3PO4 plus H2, and so it's a metal plus acid reaction, produces salt plus H2. So you can balance this equation. So there's going to be इसको 2 कर लेते हैं. This would be 3, and you've got 2 PO4s and 6 sodiums. So the ratio in this case is that every 6 sodiums, they react with 2 phosphoric acid molecules to produce 2 molecules of sodium phosphate and 3 molecules of H2. तो इसमें ये कि ये सारा है. अब इसमें ये कि what's going on in this case is कि you've got sodiums reacting with phosphoric acid. Remember, अंदर जितने मर्जी atom है, that's the formula, ठीक है? Focus on the coefficient. So if I say I have 0.8 moles of this thing, to calculate this ratio लगा के figure out how much sodium atoms would be required to react with these many moles. क्या आएगा anyone? वसना क्या होगा? For sodium, it'd be 2.4 moles. अच्छा नहीं, सुभान बैलेंस इक्वेशन है ना. जब इक्वेशन बैलेंस करते हो, कोई भी इक्वेशन बैलेंस करते हो तो रेशियो आ जाता है. सुभान, इज दिस क्लियर? यस. ठीक है, मतलब हमने बैलेंसिंग की थी ना कि भाई ये 3 हाइड्रोजन्स है, ये 2 हाइड्रोजन्स है, तो बैलेंस होना चाहिए. तो इसको तो 3 से बैलेंस करके जो नंबर आता है उसी को आज रेशियो ले लेते हैं. हाँ, वही रेशियो है ना कि जी 6 सोडियम्स विल रिएक्ट विद 2 फॉस्फोरिक एसिड. ठीक है. तो आमना क्या है उसका 0.8 moles? Sir, for sodium, it was 2.4 moles. 2.4 moles. You're getting 2.4 moles of this. So but it's simple ratios. 6 reacts with. So 6 reacts with. I mean, you could express ratio 2:6. So 0.8
is ratio x and you cross multiply. Okay. The simple method is even if you remember, if you want to be quick, that is simply what you have to do is instead of doing this thing, okay, the simple thing is just take these moles 0.8, divide by 2, okay, divide that by 2 and then multiply by 6. For example, if I want to find the moles of Na3PO4, I'm going to take 0.8 divided by divide that by 2 and then multiply by 2. So it's going to come out to be 0.8. If I want to find the moles of H2, this would be 0.8. Similarly, if I want to find the moles of H2, you could pick any one. Okay. So I'm going to pick the first one that I was given. I'm going to take 0.8, divide by 2, and then multiply by 3. So it's going to be 0.8 divide by 2 and multiplied by 3. Okay. So what do you get for this? 0.12. 1.2. 1.2. Asha, so बजाय इसके कि every time you use ratios, the simple thing is if you're given moles of one substance, you can find the moles of all the other substances. Just pick those moles, divide it by its ratio, and then multiply it by whatever the ratio is. Let's do another one. Okay, I've got 6 NaOH reacting with 3Cl2, and it produces 5 NaCls. Plus there's an NaCl. Already balanced equations आएंगी या हमें balance करनी है? देखो हो सकता है कि ऑलरेडी बैलेंस इक्वेशन हो सकता है इक्वेशन ही ना हो, वो आपको खुद बनानी पड़े, जैसे हमने सीखा ना इक्वेशन बनाना. ठीक है, मतलब वो बस कह दे कि कैल्शियम कार्बोनेट इज रिएक्टिंग विद नाइट्रिक एसिड. ठीक है, उसके बाद कुछ भी ना, इक्वेशन भी ना दे. So you have to figure out the equation yourself. के carbonate plus acid produces salt, water and carbon dioxide. ठीक है. अच्छा, खैर इसका आप करें कि रेशो हमारे पास आ गया 6:3 रेशो. तो मैं नीचे अब अलग से रेशो नहीं लिख रहा. तो अब मैं कहता हूँ कि लेट्स से मुझे इसके मोल्स पता है 0.15 मोल्स. अब या तो मुश्किल तरीके बैठ के हर दफा रेशो यूज करो, या सिंपल ये कि अगर मैंने इफ आई वांट टू फाइंड दीस मोल्स, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि जिसके मोल्स मुझे पता है ना, आई एम गोइंग टू टेक दैट 0.15 डिवाइड बाय 5 into 3. I'll get these moles. So this would be 0.15. Divide that by 5 and then multiply by 3. So क्या value आई है? What are we getting for this? 0.09. So you're getting 0.0. None. अच्छा, फिर इसके मोल्स निकालने हैं. तो इसका रेशो क्या है? 1 है. 0.15 डिवाइड बाय 5 into 1. तो वो 0.15 डिवाइड बाय 5 into 1, जो कि आई थिंक 0.03 मोल्स. और इसी तरह अगर मैंने इसके मोल्स निकालने हैं तो 0.15 डिवाइड बाय 5 into 6. into 6. So ये 5 I think 0.18. 0.18. ठीक है, 0.18 मोल्स. और वो H2O के भी निकाल लो कि H2O के निकालना आसान है कि वो Cl2 से निकाल लो तो 0.09 ही होंगे क्योंकि their ratio is exactly the same. इसको भी यूज कर सकते थे 0.15 divided by 5 into 3. करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका रेशो और इसका रेशो exactly same है. जिसके अगर 0.09 मोल्स है, the other one would also be 0.09 moles. ठीक है, रिमेंबर काउंटिंग मोल्स में हो रही है. तुम्हारे पास इतने मोल्स इसके मॉलिक्यूल्स हैं, इतने इसके, तो वी आर एबल टू फिगर आउट ऑल द मोल्स. और किसी दो का भी रेशो आप यूज कर सकते हो. तो इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir.
एक दो और कर देते हैं वैसे Al2O3 reacting with HCl and it produces AlCl3 plus water, मेरे ख्याल से 3 water molecules. अच्छा इसके मोल्स मुझे पता है कि इसके लेट्स से 1.5 मोल्स है, तो बाकियों के मोल्स फिगर आउट करने हैं, तो 1.5 डिवाइड बाय 6 into 1, तो क्या आएगा 1.5? 0.25. So you're getting 0.25 moles इसके. अच्छा फिर मैंने I have to figure out ये इसके मोल्स आ गए. अच्छा then I have to figure out के इसके मोल्स कितने हैं, तो 1.5 divided by 6 into 2. 0.5 moles. 0.5. 0.5 moles. और आखिरी वाला you have to calculate it's अच्छा किसी भी मोल्स उठा लो, इसके उठा लो 0.5 divided by 2 into 3. 0.75 moles. So you're getting 0.75 moles. Remember, this is just ratios, ठीक है? But it's just ratios in a quick way, ठीक है? Without doing the whole crisscross thing. But if you want to find moles of anything, use the known moles divided by its ratios and multiplied by whatever substance you're looking for, ठीक है? Is this clear? Yes, sir. अच्छा अब एक ये भी है इसमें कि there's another thing which is कि you'll be most of the moles questions is simply this: you find the moles of one thing, you'll be able to figure out the moles of everything in that equation. Okay, so so we're going to build on this. Okay, most moles questions are exactly the same. So we did how many formulas? I think we just did one formula for moles. Remember, everything would be done in moles. Okay, we just did one formula. The second, अब थोड़ा सा formulas क्यों? Most moles question, it's simply this. Okay, the rest are just formulas. You just have to apply formulas. Once you know the moles of the substance, किसकी कितनी quantity, इसकी कितनी है, इसकी कितनी है, then you can talk about other things. So the second formula that you're going to study is moles equal to mass divided by AR or MR. So the thing is, once you know moles, you can convert that into mass. Okay? Well, for example, I know there are but the quantity pata hona, you can convert that into mass. Okay? For example, I know करने की जरूरत भी है कि नहीं है, लेकिन for example, if I know that there are 6 eggs in a basket, right? So if I know the quantity, I know what one egg weighs, right? So I can convert it into mass. कि उसकी mass क्या होगी? So this is our formula. Okay, if I know how many atoms I've got, that's the quantity in moles. AR and MR is, what is AR and MR? That is the relative atomic mass or molecular mass expressed in grams. Or molecular, if it's a molecule, then it's the molecular mass. Expressed in grams. So what does that all mean? Every atom in the periodic table has a big number and a small number. So जो बड़ा number है, that's known as the atomic mass, and that would be called the molar mass as well. It's the mass of 1 mole of substance if you express that quantity in grams.
but इसका मतलब ये है कि molar mass ये जो 23 है ना, what that means is कि if you have 1 mole of sodium atoms, so that means you've got 23 grams. उनका जो weight होगा ना, that would be 23 grams. ठीक है, जैसा तो periodic table में ना ये conversion given है कि the mass of 1 mole of atoms is always given. It's given right next to them. Is this clear? Yes, sir. मतलब Yes, sir. इसी तरह if you look at calcium का ना that would be 40 and अच्छा calcium would be 40 and 20, right? तो जो बड़ा वाला number है, that is the molar mass. What that means is कि if you have 1 mole of calcium, so the mass of 1 mole of calcium atoms is 40 grams. ठीक है, इसी तरह for example if you have a piece of iron, now in the periodic table iron is छोटा वाला electrons is 26, protons is 26, but the mass is 56. So that indicates that 1 mole of iron, यानी एक iron का piece है, 1 mole of iron has a mass of 56 grams, right? So that's known as the molar mass. It's just the atomic mass that's given in the periodic table, and you just express that in grams. That's the mass of 1 mole of atoms. Okay, so whenever you have, okay, you pick a piece of iron और उसके अंदर उसकी mass जो है 56 grams है, तो उसका मतलब है that's equal to 1 mole of atoms. Those piece of iron के अंदर they would be 1 mole of atoms. So what is this formula? This formula is कि what would be the mass of 2 moles of sodium then? जल्दी से आंसर बताओ क्या होगा if I have 2 moles of sodium. 46 grams. ठीक है, so it's going to be 46 होगा. If I have 10 moles of sodium, तो that would be 230 grams, right? तो क्या करना है, moles को simply multiply कर दो किसके साथ, उसकी AR और MR के साथ, you'll get the mass. Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है कि अगर 10 moles हैं तो इसको 10 से multiply कर दो, अगर 50 moles हैं तो इसको 50 से multiply कर लो, ठीक है. 2 moles हैं तो multiply this by 2, that will be 46, ठीक है. So all you have to do is कि periodic table में 1 mole of substance की mass given है, which is the AR or MR. You just multiply whatever moles you have, ठीक है. आपके पास लैब के अंदर जितने मर्जी moles है रिएक्शन के अंदर ना, ठीक है. You might have 10 moles, you might have 20 moles, you might just have 2 moles. आपने बस क्या करना है, उनको multiply कर दो, इसके साथ you'll find the mass. That's it. So it's a simple formula. So the first thing is पहले mass निकालते हैं, and molecular mass would be kind of the same. कि if I have NaCl, तो उसकी 1 mole की जो mass होगी ना, molecular mass, वो दोनों को add कर दोगे, ठीक है. It's going to be क्योंकि 1 mole of sodium 23, this is chlorine in the periodic table is 35.5. So the result would be that 1 mole of NaCl will have a mass of 58.5 grams, ठीक है. Is this clear? अच्छा, उसी तरह let's say I have NaClO3. इसकी मुझे कैलकुलेट करके बताओ कि what would be the mass of 1 mole of NaClO3? Na23 is Cl 35.5, oxygen is 16 in the periodic table. Cl is 35.5 and oxygen is 16, and there are 3 of them. सारों को add up कर दो. What do we have? 106.5. Okay, so you're getting 106.5 grams. Okay. So remember 1 mole of an atom, uski jo mass hai, that is your AR or MR expressed in grams. अच्छा, एक और कर लेते हैं इसी तरह के 1 mole की mass निकालते हैं. I have ammonium phosphate कर लेते हैं.
अब इसकी 1 मोल की मास क्या होगी? Now be very careful because you जितना complicated formula होगा, you have to be very careful about counting atoms. How many nitrogen atoms you've got? 3. So it's going to be 3 into 14. Every nitrogen is 14. How many hydrogens we've got? 12. Okay, and then there is 1p, that's 31, plus there are 4 oxygens, so that's 16 times 4. So क्या बना इसका calculate करो, and you have to be very careful with your calculators. ठीक है, use brackets क्योंकि calculators get confused with multiplication and division. So make sure you put brackets in your calculator. So 1 mole of this thing, NH4 ammonium phosphate. $149. ठीक है, 149. ठीक है. But see, other time you double check. Always double check when you have a complicated formula. Always double check. ठीक है. अच्छा, so anyways, हमने वो पढ़ा था कि equation जो है ना, एक की भी moles पता लगे, you find the moles of everything. ठीक है. And then we read this formula, that is कि if you know the moles, just multiply it by the molar mass, and you'll find the mass. So now what I'm going to do is I'm going to give you I'm going to give you some questions on this. Try and solve these questions one by one. कि what's the mass? मतलब पहला मैं खुद ही कर लेता हूँ. ठीक है, find mass. और किसकी mass find करनी है? Number 1. Okay, I've got 0.158 moles of Fe2O3. तो mass क्या है इसकी? उसी फॉर्मूले को mass would be moles multiplied by the molar mass. So it would be 0.158. Multiply this by what's the mass? Fe I think is 56 times 2 plus 16 times 3. तो ये बताओ क्या बन रहा है? 25.28 grams. How much? Oh, that's if you multiply it with 0.158. But the molar mass is just 160. 160? Yeah. So And then this, when you multiply it with 0.158, ठीक है, so what do you get? 25.28. So you're getting 25.28 grams, right? So that is your mass. So if you know the moles of any substance, you can figure out the mass. ठीक है, so let's try. अच्छा, ये मुझे जल्दी से भेजो सारे. Okay, let's try the second one. I've got 0.25 moles of FeCl3. ये उधर ना AQA pure table वैसे Google में लिखो तो you'll get a pure table. ठीक है. Remember, the bigger value is the atomic mass. It says find the moles mass of 0.25 moles of FeCl3. It's gonna find the mass moles of the mass of 125 moles of calcium phosphate. उसमें मतलब clearly break. Let's hold on. ये दोनों questions करो आप. सर बी का है 40.6 40.63 40.63. यस सर अच्छा, 3 significant figures पे रोक दिया करो. Third one just stop there. ठीक है. तो 40.6 grams, right?
what's the mass of 125 moles of calcium phosphate? You get 38750 grams. 3875. अच्छा, always double check, ठीक है? खास तौर पे if you ever. What's the MR? इसको break down करो. What's the MR that you got? I think 3 calciums, that would be 120, 14 to 3. PO4, I think is 95 times 2. Okay, so you've got 31 plus 16 to 4, that's 64, plus 31, that's 95. And that's twice, so that's 95 times 2. So इस सारे को 125 से you multiplied it by 125. The molar mass ends up being 310. 310, ठीक है, 310 perfect है. So it's going to be 310. As anyways, that's your formula, ठीक है? So I'm going to incorporate this formula now into the question. That's our first formula. Like, if you're given moles or mass or AR, I mean, if you're given two things, you can find the third thing. If you're given mass and MR, you can find moles. Okay, is this formula clear? Saru, clear? Saneem, is this clear? Zainab, Subhan, what's not clear? Yes. Yes, sir. अच्छा, तो ये करेंगे, ठीक है? Exactly same thing. Remember, remember equation is talking in moles, ठीक है? Equation is the ratio of moles, not the ratio of mass, ठीक है? Remember, mass का ratio जो होता है ना, वो usually ratio होता नहीं है. For example, if I say there are two people, right? तो and there's another person here. तो इनका आपस में ratio क्या है? There's one person here and there's one person here. तो ratio क्या है? That's 1:1, right? तो ये इनकी क्वांटिटी का रेशियो है, इनके मोल्स का रेशियो है, इनकी वो काउंटिंग का रेशियो है. इन दोनों की मास डिफरेंट हो सकती है. आई मीन दिस गाय कुड हैव अ डिफरेंट मास, दिस गाय कुड हैव अ डिफरेंट मास, ठीक है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि क्वांटिटी वाइज तो रेशियो बन रहा है कि 1:1 बन रहा है, यानी एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, दैट्स 1:1. बट द मास रेशियो वुड नॉट बी 1:1. इट वुड बी, मतलब हो सकता है बहुत हैवी हो सकता है, इसका वेट जो है वो डबल हो सकता है, ठीक है? So the thing is कि remember this के equation के अंदर ना, जब ये तीन चार चीजें आपस में react कर रहे हैं ना, तो it's the ratio of the number, it's the ratio of के एक molecule 6 molecule साथ react कर रहा है. It's not the ratio of the mass. Is this point clear? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. तो ये याद रखा कि mass का ratio usually नहीं होता, ठीक है? हमेशा नंबर का रेशियो होता है, क्या अमाउंट किया आपके पास, ठीक है? हाँ, व्हाट्स द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है? उनका आपस में आप रेशियो लेते हो. अच्छा, एनीवेज, अब ये अब रेसिपी, हमारी जो रेसिपी है ना, उसमें एक और चीज आ गई है, व्हिच इज कि नाउ वी कैन कन्वर्ट मोल्स टू मास, ठीक है? बट द इक्वेशन इज गोइंग टू डील इन मोल्स. तो पहले तो एक इक्वेशन लिख लेते हैं कि लेट्स से आई हैव बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड सी इक्वेशन लिखते हैं. अमोनियम फॉस्फेट plus it's reacting with calcium hydroxide. Your fertilizer or lime wala calcium phosphate is the salt that's being produced. Plus there's a water molecule, plus there is NH3. So assume that the equation has already been made for you. 6, and this would be PO4 twice and 3 calcium hydroxides, okay? So I have the ratios now. Okay, 2 molecules इसके, 3 इसके, इसका एक ही है जो produce हो रहा है. This would be 1. This one over here would be 1 as well. So 2:3
रेशो 1 रेशो 6 ठीक है। तो फर्स्ट थिंग, अब मैं आपको मोल्स ही नहीं दे रहा, मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास ना 50 grams ऑफ दिस थिंग, ठीक है। द क्वेश्चन इज 50 grams ऑफ अमोनियम फॉस्फेट। I intend to use 50 grams of this thing. इसके हिसाब से कैलकुलेट करो बाकी सारों की मासेस कि इन सारों की मास क्या होगी। तो द फर्स्ट थिंग इज कि इक्वेशन डील्स विद मोल्स नॉट इन मास। तो पहली चीज है कि इसको मोल्स में तो कन्वर्ट करो। मोल्स का फॉर्मूला क्या था कि मास डिवाइड बाय द मोलर मास। मोलर मास इसकी निकाल लो कि क्या होगी, 3 n's, so that's 3 times 14। एज कितने हैं, 12 plus p is 31 plus there's 4 oxygens, so 16 times 4। तो मुझे बताओ कितने मोल्स आ रहे हैं इस चीज के। अच्छा, इस 2 को यूज नहीं करना, दिस 2 इज द रेशो, ये मोल्स पे अप्लाई होगा रेशो, ठीक है। 2:3, इसका मास से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। तो मास डिवाइड बाय द मोलर मास कितना बना हमारा, 0.34 moles. you're getting 0.349 moles। It's like 0.235. नहीं 0. नहीं, कौन सा 0.235? 0.335. 0.335. तो ठीक है। अच्छा, रिमेंबर फिफ्थ वाले को राउंड करना है, व्हाट कम्स आफ्टर फिफ्थ इट हैज टू बी राउंडेड ऑफ, ठीक है। Sir, I mean- it is also 5. तो फिर वो 6 होगा ना, इट्स गोइंग टू बी 0.336 होगा, ठीक है। मेक श्योर कि you're rounding off at the third one, so that's going to be 0.336 moles। अच्छा, anyways, you found the moles of one substance, ठीक है, 0.336 moles। एक, अच्छा एक के भी मोल्स पता लग जाए ना, तो using that you can find the moles of all the other things। तो क्या होगा, 0.336 divided by 2 into 3, तो इसके मोल्स आ जाएंगे। तो 1 second, that's 0.336 divided by 2 into 3, ठीक है। ये हमने ट्रिक यूज की थी, इसके मोल्स हैं तो डिवाइड बाय 2 into 3, you get this। इसके मोल्स निकालने, सेम थिंग, 0.336 divided by 2 into 1। इसके मोल्स निकालने तो आपके पास आ जाए 0.336 डिवाइड बाय 2 into 6। वो अगले की भी वही होंगे वैसे। बारी बारी मुझे सारों के मोल्स बताओ क्या आ रहे हैं। What's the first one? For calcium hydroxide, it's 0.504. 504. 0.50? 0.504. So you're getting 0.504 moles. What about calcium phosphate? 0.168 moles. So 0. कितना है, 8? 168. अच्छा, एक सेकंड, that's an important question, ठीक है सलीम। remember when you use the formula moles equal to mass divided by mr, don't include that 2 anywhere, ठीक है। That's just the ratio। जब वो आपस में comparison होगा ना, that's going to be 2:3। This is a comparison with this one। Salim, do you get my point? Yes, sir. ठीक है, इस 2 की जो बारी आएगी ना, वो जब इसके मोल्स से इसके मोल्स निकालोगे ना, that's where 0.336 divided by its moles into the moles of the other substance, ठीक है। तो वहां पे ये यूज होगा। when you using the formula, इस 2 को बीच में नहीं डालना, ठीक है, क्योंकि this 2 is a relationship of this thing with this thing and with all the other things as well, ठीक है। तो वो इस 2 और इस 3 का और इस 1 का और इस 6 का, इनका काम सिर्फ तब आएगा जब आप इनका आपस में कंपैरिजन करोगे कि इसके मोल्स इतने हैं तो इसके कितने होंगे, इसके कितने होंगे। That's when you use these, ठीक है। फॉर्मूले के अंदर नेवर, जब आप MR कैलकुलेट कर रहे हो ना, तो you just उस 2 को इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। क्लियर है?
Yes, sir. तो इसका Yes, बता, अच्छा इसका बता दो ये क्या होगा। 1.008. अच्छा 4.01 हो गया, राइट? Sir, it's 1 point. नहीं क्या 1.01? जी sir. yes. अच्छा 1.01 और फिर इसके भी 1.01 मोल्स होंगे, ठीक है। तो इन सारों के 1.01 मोल्स ही आ रहे होंगे। अब अच्छा मोल्स पता लग गए हैं, ठीक है। तो अब मैंने दोनों को मिक्स कर दिया, मतलब आई हैड द मास बट आई कन्वर्टेड इट इनटू मोल्स। आई हैड द मोल्स, आई फाउंड द मोल्स ऑफ एवरीथिंग इन द इक्वेशन। अब वो आपको बीच में कुछ भी कह सकता है, वो कहता है इसकी मास निकालो, मोल्स तो पता है ना, तो यूज द फॉर्मूला अगेन, you know it's 0.168 moles, right? And you know that moles is equal to mass divided by the molar mass, which is, अब कैल्शियम फॉस्फेट की अभी हमने कैलकुलेट भी की थी, it was 310. तो फाइंड द मास। वो आपसे पूछ सकता है कि इसकी मास निकालो। अच्छा अगेन फॉर्मूले में ये 6 इंक्लूड नहीं होना चाहिए, 6 रेशो था जो कि इंक्लूड हम कर चुके हैं, सो यू डोंट इंक्लूड द 6 अगेन, ठीक है। फॉर्मूले के अंदर ये रेशो बीच में नहीं आना चाहिए, जस्ट मेक श्योर। तो अब इसके आई नो कि इट्स 1.01 मोल्स, आई जस्ट नीड टू फाइंड द मास। तो फॉर्मूला क्या था, मोल्स इज इक्वल टू mass, which I don't know at the moment, divided by the molar mass, which is H2O जो है, that's 2 plus 16, 18 होता है, ठीक है। तो I can find the mass. तो the thing is कि mass given होगी, you can find moles, एक की भी moles पता होंगे, you can find the moles of everything. और फिर वो आपको किसी का भी पूछ सकता है कि what's the mass of this thing, what's the mass of this thing, ठीक है। Is this clear? Yes sir. तो एक वैसे ही छोटा सा क्वेश्चन कर लो कि अगर ना P4 O2 react करें and they're forming P4O10, so I think it's going to be 5O2. So the thing is I've been given there is 40 grams of P4, so find the mass of O2 that is required and the mass of P4O10. अब mass directly नहीं कर सकते, पहले आपको moles निकालने पड़ेंगे। इसके moles निकालोगे, इससे इसके moles से you can figure out the moles of all the other substances, फिर वो formula लगा के you can find the mass. तो try solving this question, ठीक है। ये जरा सारे करो। Is this clear? Yes sir. अच्छा ये मैं एक सेकंड भेज भी दूं। चलो ठीक है, I've sent the question, send me the answers, ठीक है। Okay everyone, take care. No, sir. Hafiz.